Assalamu alaikum students, I am Wasim Ikram. This is the 9th lecture in the series of 45 lectures on digital logic design. कैसे हैं आप आज? इंशाल्लाह अच्छे होंगे। पिछली दफ़ा हमने कुछ बूलियन अलजेब्रा के रूल्स, लॉज और थ्योरम्स की बात की थी। याद हैं? कुछ पढ़े आपने? कुछ याद हुआ है? आज हम मज़ीद बातें करेंगे बूलियन अलजेब्रा पे। उससे पहले कि आज नए टॉपिक्स पे बात हो, लेट्स जस्ट रिव्यू एंड रिवाइज द थिंग्स व्हिच वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर। Last time we started with Boolean algebra. Boolean algebra we said deals with two values. जिस तरह normal algebra होता है इसी तरह Boolean algebra होता है। जिस तरह हर मैथमेटिक्स की ब्रांच के कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, इसी तरह Boolean algebra के लॉज, रूल्स एंड थ्योरम्स हैं। So we started with the associative the law, the distributive law and the commutative law. देख लिया होगा, बड़े सिंपल से हैं। Then we talked about 12 rules. डिफरेंट टाइप के रूल्स थे। फॉर एग्जांपल ए प्लस ए बार जो है वो क्या होता है, ए इंटू ए बार क्या होता है, इस किस्म के रूल्स हैं जो आमतौर पे आप यूज कर रहे होते हैं टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशंस। इसके अलावा हमने बात की थी डी मॉर्गन्स थ्योरम्स। दो थ्योरम्स है, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2। अगेन वो हमें बताते हैं कि एक फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन हो उसको चेंज किया जा सकता है। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो सम फॉर्म में आ जाती है, अगर सम फॉर्म में हो तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाती है। After having studied the rules, we talked about analyzing Boolean circuits. Logic circuits जो हैं हमने बताया था कि अगर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए, एक्सप्रेस किया जाए तो उनको समझना, एनालाइज करना, उनकी आउटपुट मालूम करना बड़ा आसान हो जाएगा as compared to implementing a circuit. So we did analysis of 2 or 3 circuits. Then we talked about simplifying Boolean expressions. We said if you have a large circuit, उसको आप simplify कर सकते हैं, पर अगर देखने से आप अंदाजा करें कि छोटा सर्किट कैसे बनेगा तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। So the proper step would be to express that circuit in the form of a Boolean expression. जब Boolean expression आ जाएगी तो उसके बाद ये जितने भी laws, rules and theorems अप्लाई करेंगे आपको एक simple form में expression मिल जाएगा। उससे आप अगर एक circuit बनाएंगे, it would of course be very small. It would be a simple circuit as compared to the original circuit. लास्ट थिंग हमने जो बात की थी, इट वॉज रिप्रेजेंटिंग दीज एक्सप्रेशंस इन 2 फॉर्म्स। हमने कहा था कि 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जिसमें हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक थी सम ऑफ प्रोडक्ट्स। कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको आप सिंप्लीफाई करें, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगी। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या है? वेल यू हैव प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट टर्म्स, ओके, जो कैसे आती हैं आपको एंड गेट के थ्रू आती हैं। एंड गेट के इनपुट्स पे कुछ वेरिएबल्स लगाएं, वो आप आउटपुट आपको देंगे। सो यू हैव डिफरेंट प्रोडक्ट टर्म्स। उन सबको जब ऐड कर दें थ्रू एन और गेट, वो आपको एक सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म और फॉर्म की एक्सप्रेशन निकाल जाती है। Then we talked about the product of sum forms, जो एक alternate तरीका है to represent expressions. Product of sum form में ये है कि आपके और गेट्स हैं जिन पे आप डिफरेंट वेरिएबल्स अप्लाई कर रहे हैं। सम टर्म्स अगर आप सारों को एंड कर दें, सो बेसिकली आपके पास क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया ऑफ सम टर्म्स। सो यू हैव 2 फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म इक्वेशंस। लास्ट टाइम वी टॉक्ट अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। एनालिसिस की बात की थी, सिंप्लीफिकेशन की बात की थी। देन वी सेड यू कैन रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। रूल्स की पहले बात कर चुके हैं ना। दीज आर नॉट सेपरेट थिंग्स, बेसिकली आपस में सारे रिलेटेड हैं। जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप सारे वो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, उसमें थ्योरम्स अप्लाई कर रहे हैं, लॉज अप्लाई कर रहे हैं। व्हेन यू अल्टीमेटली सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन यू गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। वो सिंपलेस्ट फॉर्म जो एक्सप्रेशन की होगी वो या तो एसओपी फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में होगी, या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में होगी। जब आप बूलियन एक्सप्रेशन को एनालाइज कर रहे हैं, अगेन यू लुक एट दोज रूल्स, यू यूज दोज रूल्स। सो ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं। एंड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ दिस डिजिटल लॉजिक डिजाइन कोर्स, व्हेन यू आर analyzing expressions, when you are simplifying expressions, you relate them to SOPs and POS forms and of course rules and theorems. Today I'm going to start by looking at 2 examples. जिस तरह हमने पिछली दफा एग्जाम्पल की थी, आज भी मैं 2 मजीद एग्जाम्पल्स करना चाह रहा हूँ। We would be looking at 2 circuits. One of the circuits would again be analyzed. उसकी हम ट्रुथ टेबल निकालेंगे उसमें, और उसके बाद we would be simplifying that same expression using the different rules. और वो एक्सप्रेशन हम देखेंगे, इट वुड बी रिप्रेजेंटेड इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स। उसका जो ट्रुथ टेबल आएगा इट वुड बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल एक्सप्रेशन जिसको हमने एनालाइज किया था। दैट प्रूव्स दैट आप सिंप्लीफाई करके जो सर्किट बनाएं या एक्चुअल जो एक्सप्रेशन है उसको आप देखें, दोनों एक चीजें हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में वी वुड अगेन बी एनालाइजिंग द सर्किट। उस सर्किट को हम उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। then we would be simplifying the expression representing that circuit. जो expression हमारे पास आएगा वो आएगा product of sum form में, sum of product form में नहीं, product of sum form में आएगा। So again उसका जो truth table आएगा, जो original का है उसको देखेंगे, दोनों को compare करेंगे, we would see that both truth tables are the same, so that verifies that you can simplify an expression into either sum of product forms or product of sum forms.
तो आइए देखते हैं दोनों एग्जांपल्स को. Consider the logic circuit comprising of NOT gates, AND gates, NAND gate, and a NOR gate. The circuit can be represented by a Boolean expression. Let us define the Boolean expression that represents the logic circuit. Starting from the left-hand side of the circuit, output of NOT gate 1 is B bar. Output of NOT gate 2 is A bar. Output of 2 input AND gate 3 is AB bar. Output of 2 input AND gate 4 is CD. Output of 3 input NAND gate 5 is A bar, B bar, CD whole bar. And output of 2 input NOR gate 6 is A B bar plus A bar B bar CD whole bar. And both terms have an entire bar over them. So the term A B bar and the term A bar B bar CD whole bar have a bar. Now consider the expression which has two terms. The term A B bar and the term A bar B bar CD whole bar. Assume that the term A B bar is represented by the literal x. Also assume that the term A bar B bar CD whole bar is represented by the literal y. Thus, the expression is now represented as x plus y whole bar. What is the output for this, or rather for which condition does the expression output a 1? अगर आपको याद हो x plus y whole bar ये क्या represent कर रहा है? ये basically represent कर रहा है NOR gate का ऑपरेशन. NOR गेट अगर 2 इनपुट NOR गेट हो तो क्या इनपुट कॉम्बिनेशन आ रही हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. कब 1 होगा? NOR गेट के जब दोनों इनपुट्स 0 0 हो, ओनली देन द आउटपुट इज 1. सो देयरफॉर व्हेन टर्म्स x and y are both zeros, only then the output is a 1. The term x equals to a b bar is 0 when literal a is 0 or literal b bar is 0 or b is 1. Term y कब 0 होगी? Well, term y as we said is equal to A bar B bar CD whole bar. It is 0 when the term A bar B bar CD is equal to 1. If you just remove the whole bar from this term, therefore A bar B bar CD is equal to 1. The term A bar B bar CD is 1 when literals A bar equals to 1, B bar equals to 1, C equals to 1 and D equals to 1. These can also be represented as when A is equal to 0, B equals to 0, C equals to 1 and D equals to 1. Only then y term would be equal to 0. Now let us define the conditions for the output of the circuit to be a 1. Considering the term A B bar, the conditions are A equals to 0 or B equals to 1. Considering the term A bar B bar C D whole bar, the conditions are A equals to 0 and B equals to 0 and C equals to 1 and D equals to 1. Now for both terms A has to be 0, otherwise the output is not equal to 1. B also has to be 0, otherwise the second term is equal to 1 and the output is 0. Similarly, C and D variables have to be equal to 1s, otherwise the second term is equal to 1 and the output is 0. The truth table describes the function of the logic circuit and the expression where all outputs are equal to 0 except for the input combination of A equals to 0, B equals to 0, C equals to 1 and D equals to 1. Now let us verify the analysis of the logic circuit by simplifying the original Boolean expression representing the logic circuit and obtaining the truth table of the simplified expression. The two truth tables should be identical. Now, the expression is simplified to A B bar whole bar ANDed with A bar B bar C D double bars by applying De Morgan's A bar B bar C D double bar by applying De Morgan's second theorem. Now, by applying De Morgan's first theorem and rule number 9 to the two terms results in A bar or B double bar ANDed with A bar B bar C D. The term A bar or B double bar simplifies to A bar or B. You remove two double bars. Applying the disputed law, the expression simplifies to A bar B bar C D. Now let us have a look at the conditions. The conditions A equals to 0, B equals to 0, C equals to 1, D equals to 1 are identical to the original expression that was analyzed. The truth table representing the function represented by the simplified expression is identical to the function represented by the truth table prepared earlier as a result of analyzing the Boolean expression. We've just looked at an example. Example की जो simplified हमारे पास expression आई थी A bar B bar C D. A bar B bar C D को अगर देखें ये कौन सी फॉर्म है? बेसिकली एक प्रोडक्ट टर्म है. कैसे आएगी? इफ यू यूज ए 4 इनपुट एंड गेट, उसके 4 इनपुट्स पे A बार B बार थ्रू इन्वर्टर्स कनेक्ट कर दें और C D डायरेक्ट इनपुट कनेक्ट कर दें तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा. तो एक प्रोडक्ट टर्म आ रही है. अगर मजीद इस किस्म की प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं तो उनको अगर और के साथ ऐड कर देते तो समय प्रोडक्ट फॉर्म आ जाती. तो एक सिंपलेस्ट आप कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट टर्म आ गई है.
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो हम देखेंगे, अगेन वी आर गोइंग टू बी एनालाइजिंग सर्किट. एनालाइज करके उसका एक हम फंक्शन टेबल बनाएंगे. अगेन उसको वेरीफाई करने के लिए वी विल सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स दैट ओरिजिनल सर्किट. अब जब सिंप्लीफाई करेंगे हम देखेंगे कि वो जो हमारे पास सिंप्लीफाइड टर्म आ रही है वो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आ रही है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं आ रही. दूसरी एक जो इंटरेस्टिंग चीज हम देखेंगे, द ओरिजिनल सर्किट विच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ हैज 4 वेरिएबल्स. उसी तरह ए बी सी डी इनपुट्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं. जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं देन वी विल सी दैट वी डू नॉट रिक्वायर द फोर्थ वेरिएबल, डी वेरिएबल की उसकी जरूरत ही नहीं है. हमारी जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ 3 वेरिएबल्स ए बी सी होंगे उसमें. सो एज यू कैन सी, आई मीन इट्स अ वेरी सिंपल सर्किट. 4 वेरिएबल्स की जगह 3 वेरिएबल्स हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें. So let us have a look at the second example. Before I talk about the second example, पहली example में आपने देखा we applied De Morgan's theorems. हमने different rules apply किए उसको simplify करने के लिए, उसको analyze करने के लिए. इसी तरह इधर भी हम laws, rules and बाकी जो हमने theorems पढ़े थे वो apply करेंगे उसमें. So let us have a look. Consider the logic circuit implemented using NOT gates, AND gate, OR gate and an AND gate. The circuit can be represented by a Boolean expression. Let us define the Boolean expression representing the logic circuit. Starting from the left hand side of the circuit, output of NOT gate 1 is A bar. Output of NOT gate 2 is C bar. Output of 3 input AND gate 4 is A bar, B, C bar. Output of 2 input OR gate 5 is C bar plus D. Plus means OR. Output of 2 input NAND gate 6 is A bar, B, C bar. This is the first term. ANDed with the second term C bar plus D. The two terms are ANDed together and inverted. So you have a whole bar over both the terms. Now consider the expression which has 2 terms. The term A bar B C bar and the term C bar plus D. Assume that the term A bar B C bar is represented by the literal X. Also assume that the term C bar plus D is represented by the literal Y. Thus the expression is now represented as X, Y whole bar. Now if you remember, X, Y whole bar, what type of a gate are we using? Well, it's a NAND gate. Now if you remember, for a 2 input NAND gate, you have 4 inputs, 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. 0, 0 पे आउटपुट क्या होता है? It's a 1. 0, 1 पे आउटपुट क्या होता है? 1. 1, 0 पे आउटपुट क्या होता है? 1. और 1, 1 पे आउटपुट क्या होता है? 0. So इसको समराइज कैसे करेंगे? If any input is 0, the output is 1. So therefore, when term X or the term Y is 0, the output is a 1. Now, the term X equals to A bar B C bar is 0 when literal A bar is 0, or rather A is equal to 1, literal B is 0, or literal C is equal to 0, or C equals to 1. Similarly, the term Y equals to C bar plus D is 0 when the literals C bar equals to 0 and D equals to 0, or when C equals to 1 and D equals to 0. Now let us have a look at the truth table. Conditions for output equals to 1 are for the term A bar B C bar, A equals to 1 or B equals to 0 or C equals to 1. For the term C bar plus D, C equals to 1 and D equals to 0. The truth table outputs corresponding to the input conditions A equals to 1, B equals to 0 or C equals to 0 are marked as 1s for the first term. The truth table outputs corresponding to the input conditions C equals to 1 and D equals to 0 are marked as 1s for the second term. The 4 variable truth table shows that for all input combinations of variables A, B, C and D, the output only depends on the inputs A, B and C. D does not play any role in the function output. For example, for the input combination A equals to 0, B equals to 1, C equals to 1, the output is 1. If D is 0 or D equals to 1, it doesn't matter. The output is 1. Similar is the case for other inputs. Thus, a simpler 3 variable truth table can represent the same function as the 4 variable truth table. The 3 variable truth table is shown. It only has the variables A, B and C. Let us verify the analysis of the logic circuit by simplifying the original Boolean expression representing the logic circuit and obtaining the truth table of the simplified expression. The 2 truth tables should be identical. Now, the Boolean expression is simplified to A bar B C bar whole bar plus C bar plus D whole bar. We obtain this expression by applying De Morgan's first theorem.
Now, applying De Morgan's first and second theorems to the two terms respectively, we get A double bar plus B bar plus C double bar. This is for the first term. Plus C double bar D bar. This is for the second term. Now, the double bars can be removed. So, the expression simplifies to A plus B bar plus C for the first term, and for the second term, C D bar. The simplified version is A plus B bar plus C. In the circuit that we just discussed, the simplified expression has the form A plus B bar plus C. D वेरिएबल हम जैसे देखा वो मिसिंग है, उसकी जरूरत ही नहीं है. Now, A plus B bar plus C, ये कौन सी टर्म है? सम टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है. बेसिकली इट्स ए सम टर्म. सम टर्म कैसे आ रही है? यू हैव 3 इनपुट ऑर गेट. एक इनपुट पे ए वेरिएबल कनेक्ट करेंगे, दूसरे पे बी को इन्वर्ट करके कनेक्ट करेंगे और तीसरे पे सी को कनेक्ट कर रहे हैं. अगर हमारे पास मजीद इस किस्म की सम टर्म्स होती और उनको एंड कर देते तो हमारे पास क्या आना था? प्रोडक्ट ऑफ सम. राइट, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की इक्वेशन की. सो वी हैव ए सिंगल सम टर्म. नाउ लेट अस गो बैक टू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस. सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हमने बताया था वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड दे आर ऑल समड अप. ओके, जो हमने एग्जांपल्स पिछली दफा की थी वो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं है. स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या है? लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल. यू हैव ए बी प्लस सी. ठीक है, सो यू हैव द फर्स्ट टर्म ए बी, इट इज ए प्रोडक्ट टर्म, एंड द नेक्स्ट टर्म इज सी. वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही. जो एक्सप्रेशन है या जो सर्किट बनेगा उसके कितने वेरिएबल्स हैं? बेसिकली 3, ए बी एंड सी. सो द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन इज 3, ए बी एंड सी. ओके, पहली जो प्रोडक्ट टर्म है उसमें ए एंड बी आया, इनकम्प्लीट है बिकॉज सी नहीं है उसमें. सिमिलरली जो सेकंड टर्म है उसमें सिर्फ सी है और ए बी नहीं है. राइट, सो दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड करने के लिए you use the rule a plus a bar equals to 1. So we are going to be using that rule to make a non-standard SOP form of an expression into a standard form. Similarly, when we talk about product of sum form, product of sum forms, आपके पास let's say a plus b एक term है, sum term है, and then you have another term c plus d. इनको आपस में end कर दिया, what do you get? You have product of sum form. Okay, again ये जो है by definition ये standard form नहीं है. पहली term में कौन से variables हैं? a and b. दूसरे टर्म में कौन से वेरिएबल्स हैं? सी और डी. ओके, डोमेन क्या है या कितने टोटल वेरिएबल्स हैं इस एक्सप्रेशन में? ए बी सी एंड डी, 4 वेरिएबल्स हैं. सो हर टर्म में बेसिकली 4 वेरिएबल्स होने चाहिए, 4 लिटरल्स होने चाहिए. जरूरी नहीं है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो, ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार भी हो सकता है. सो व्हेन यू नीड टू चेंज ए प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन इनटू ए स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, यू यूज द रूल ए एंड ए बार इक्वल्स टू 0. सो लेट अस सी हाउ वी convert non-standard SOP form of expressions and non-standard POS or product of sum forms of expressions into standard forms. A standard sum of product form has product terms that have all the variables in the domain of the expression. The sum of product expression AC bar plus BC bar is not a standard sum of product form as the domain of the expression has variables A, B and C. To convert the non-standard sum of product expression into a standard sum of product expression, the rule a plus a bar equals to 1 is used. Applying the rule to expression AC bar plus BC bar converts it into a standard sum of product form having the terms a b c bar plus a b bar c bar plus a bar b c bar. Each product term has 3 variables a, b and c. Now considering the first term a c bar, it is ANDed with b plus b bar. And similarly, the second term BC bar, which is again a non-standard term, to make it into a standard term, it is again ANDed with a plus a bar. A standard product of sum form has some terms that have all the variables in the domain of the expression. The product of sum expression having the 3 sum terms a plus b bar plus c, the second term a plus b plus d bar, and the third term a plus b bar plus c bar plus d are not a standard POS form as the domain of the expression has variables a, b, c and d. Therefore, all the 3 terms should have all the 4 variables. To convert the non-standard product of sum form into a standard product of sum form, the rule a into a bar equals to 0 is used. Applying the rule to expression, it converts it into a standard product of sum form. Each of the 5 sum terms have the 4 variables a, b, c and d.
considering the first term a plus b bar plus c, d plus d bar is added to this term to make it into a standard term. Similarly, the second term a plus b plus d bar is not a standard term. To make it into a standard term, c into c bar is added. The third term a plus b bar plus c bar plus d is a standard term, so it does not need to be changed. We have just looked at representing expressions in standard SOP form and standard POS form. स्टैंडर्ड की बात हम कैसे कर रहे हैं? बेसिकली जो भी सम टर्म्स हैं, प्रोडक्ट टर्म्स हैं, उनमें सारे वेरिएबल्स मौजूद होने चाहिए इसमें. Now, why are we emphasizing standardizing expressions? So, why should we have standard SOP form or standard POS form? Basically, कोई भी लॉजिक सर्किट जो है उसका हम फंक्शन टेबल बनाते हैं उसमें. So, any logic circuit can be represented by an expression which is either in the sum of product form or the product of sum form. Now, if both expressions are represented in the standard form, then we can implement a circuit either using the sum of product form or using the product of sum form. फायदा क्या होगा? Okay, possible ये है कि sum of product form में आपके पास let's say 5 terms हैं और उसकी अगर product of sum form लें उसमें 3 terms आ जाएं. So, if you implement the circuit using the product of sum form, आपका circuit simpler होगा. अगर वो SOP फॉर्म से करेंगे वो हो सकता है सर्किट आपका ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो. सो इफ यू हैव दी स्टैंडर्ड फॉर्म्स यू कैन इजीली कन्वर्ट फ्रॉम SOP टू POS, फ्रॉम POS टू SOP. ये आगे कन्वर्जन हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं उसमें. दूसरा फायदा ये है कि ये जो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, हाउ डू वी सिंप्लीफाई देम? बेसिकली वी अप्लाई ऑल द रूल्स, द थ्योरम्स एंड द लॉज व्हिच वी हैव लर्न. ओके, ये बेसिकली आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उसको परसीव कर रहे हैं, आपको रूल्स कितने याद हैं, आपको टर्म्स, आप हो सकता है कुछ टर्म्स आपको नहीं नजर आ रही प्रॉपरली, आप नहीं समझ पा रहे. सो बेसिकली द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दीज एक्सप्रेशंस बाय अप्लाइंग दीज रूल्स डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी. और हो सकता है आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तो आप अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर सकें. Now, there are other methods to simplify these expressions, and they basically provide you a systematic way of simplifying the expressions. एक Karnoff maps का एक मेथड है जो हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे. तो उसमें एक सिस्टमैटिक तरीका जिसके तहत आप सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं. सो अगेन के मैप में एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड टू हैव देम इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म. जरूरी बाद में बात करेंगे अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तब भी हो जाता है, पर टू डू इट प्रॉपरली यू नीड टू हैव इट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म. तीसरा फायदा फॉर हैविंग दीज एक्सप्रेशंस इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म इज दैट इफ यू रिमेंबर, पहले लेक्चर में हमने बात की थी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस. प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस क्या थे? हमने कहा था कि हम किसी बेसिकली एक डिवाइस है, इट्स ए जनरल पर्पस डिवाइस. उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर जो गेट्स इंप्लीमेंट हुए हैं वो एक जनरल तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है. सो यू कैन प्रोग्राम दैट डिवाइस टू परफॉर्म एनी फंक्शन. ठीक है, तो आपके ख्याल में किस तरीके से या किस तरह गेट कनेक्ट हुए होंगे? वेल, जनरली दे आर कनेक्टेड इन दैट सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. बहुत सारे आपके पास एंड गेट्स होंगे, एंड गेट्स की एक बेसिकली अरे होगी और फिर आपके पास एक और गेट्स की अरे होगी और इन्वर्टर्स की अरे होगी. रिमेंबर वी टॉट इन अर्लियर लेक्चर्स दैट यू कैन रिप्रेजेंट और इंप्लीमेंट एनी लॉजिक सर्किट यूजिंग दीज बेसिक फंक्शंस. एंड गेट, और गेट, इन्वर्टर्स है, सब कुछ आप बना सकते हैं. सो ये जो PLDs हैं उनमें भी बेसिकली इन 3 गेट्स की अरेज होती हैं. सो नाउ इफ यू कैन कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड POS, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, वो इजीली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद और रादर विद PLD डिवाइसेस. सो ये तीनों चीजें हम बाद में देखेंगे. ओके, नाउ व्हेन यू हैव दीस स्टैंडर्ड सम टर्म्स एंड प्रोडक्ट टर्म्स, इनको एक दूसरे नाम से हम लॉजिक डिजाइन में डिस्कस करते हैं. सो यू हैव मिनटर्म्स एंड यू हैव मैक्सटर्म्स. जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म्स हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के एक्सप्रेशन में, उनको आप मिनटर्म्स कहेंगे. जो स्टैंडर्ड सम टर्म्स हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, उनको आप कहते हैं मैक्स टर्म्स. Let us consider an example to explain these minterms and maxterms. Let us suppose that we have an expression having 2 variables a and b. कितने आपके ख्याल में minterms हो सकते हैं और कितने maxterms represent कर सकते हैं इन 2 variables को यूज करते हुए? Basically 2 variables हैं. So the first minterm would be a bar b bar. Second minterm जो होगा a b bar, फिर a bar b and a b. 4 minterms आ गए. Maxterms कैसे होंगे? Well, one of the maxterms is a plus b. The other would be a plus b bar. तीसरा जो होगा a bar plus b और चौथा जो होगा a bar plus b bar. So 2 variable expression जो है उसके 4 ही minterms होंगे और 4 ही maxterms होंगे. इन minterms and maxterms की binary values क्या होंगी? So let's consider the minterm a bar b bar.
बाइनरी वैल्यूज क्या होंगी, a 0 हो, b 0 हो, तभी a बार b बार आएगा. a b बार लेट्स सपोज. बाइनरी वैल्यूज क्या होंगी, a b बार है, a शुड बी 1, b शुड बी 0. एंड सिमिलरली मैक्स टर्म्स को देखें, a प्लस b. बाइनरी वैल्यूज क्या होंगी, बेसिकली ये जरा याद रखिएगा, मैक्स टर्म के ऊपर जो है a प्लस b जो है, दिस इज सपोज टू बी मैक्स टर्म, इट इज सम टर्म. इसके ऊपर अगर बार लगा दें, दैट मीन्स आपने इन्वर्ट कर दिया. इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, वो डिमॉर्गन्स अगर लॉ अप्लाई करें, यू गेट a बार इंटू b बार. सो ये इनवर्स है ऑफ द मिनटर्म a बार b बार. a बार b बार की बाइनरी वैल्यूज क्या थी, एंड a एंड b की 0 एंड 0. सिमिलरली फॉर मैक्स टर्म a प्लस b, द बाइनरी वैल्यूज वुड बी 0 एंड 0. Let us have a look at a table having three variables a, b and c. So let us list all the minterms and the maxterms. Consider the table having three variables a, b and c. So we have 8 possible combinations starting with 0, 0, 0 and ending at 1, 1, 1. Since we have 8 input combinations, we have 8 minterms starting with a bar, b bar, c bar and ending with a, b, c. So minterm a bar, b bar, c bar is considered to be minterm 0. The minterm a, b, c is considered to be minterm 7. Let us look at the max terms. The max term a plus b plus c is considered to be max term 0. And the max term a bar plus b bar plus c bar is considered to be max term 7. Now looking at the binary values of each of these minterms and max terms, consider the minterm a bar, b bar, c. What are the binary values? A bar, b bar means both variables are zeros and c has to be 1. Because for a product term such as a bar, b bar, c, all literals have to be 1 for the product term to be a 1. So literal a bar is 0, literal b bar is 0, or rather a would be 1, b equals to 1 and c is 1. Now considering the max term a plus b plus c bar, the binary values for the max term are a equals to 0, b equals to 0 and c equals to 1. We have looked at an example of 3 variables. So we said a 3 variable expression can have a maximum of 8 minterms and 8 max terms. Let us now talk about converting from a standard SOP to a standard POS form. Well, कैसे करेंगे, एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है जो मिनटर्म्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हुई है, उसको हमने बताया था कि कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम्स, राइट, या POS फॉर्म में. नाउ लुकिंग एट मिनटर्म्स एंड मैक्स टर्म्स, लेट्स सपोज 3 वेरिएबल्स हैं और जो एक्सप्रेशन है जो एक सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें मिनटर्म 1, 2 एंड 3 हैं, बाकी 4, 5, 6 एंड 7 मिनटर्म्स नहीं हैं, पहले 3 मिनटर्म्स हैं, राइट. पहले 3 मिनटर्म्स क्या होंगे, वेल a बार, b बार, c बार, a बार, b बार, c और a, b बार, c, ये 3 मिनटर्म्स होंगे. ओके, अगर इसी एक्सप्रेशन को आपने मैक्स टर्म्स की फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे, बेसिकली जो 3 मिनटर्म्स सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में थे वो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में नहीं होंगे, राइट. सो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कौन से मैक्स टर्म्स होंगे, बेसिकली 4, 5, 6 एंड 7. सो 4, 5, 6 एंड 7 जो मैक्स टर्म्स अभी हमने वो टेबल में देखे थे, अगर आप वो लिख दें, दैट वुड रिप्रेजेंट एन एक्सप्रेशन और ए सर्किट विच इज इक्विवेलेंट टू दैट ओरिजिनल सर्किट रिप्रेजेंटेड बाय द 3 मिन टर्म एक्सप्रेशन. Let us again have a look at an example in which we represent 2 forms of expressions, one written in terms of minterms and the other written in terms of maxterms. अगर इन दोनों expressions को आप solve करें, equate करें और उसको analyze करें, result आपको एक ही मिलेगा. So let us have a look. The 5 sum term standard SOP expression has the binary values 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 and 1, 1, 1. The expression is represented in canonical sum form where the variables a, b and c define the domain of the expression. The numbers 0, 2, 3, 5 and 7 represent the minterms present in the SOP expression. So as you can see, the minterms are a bar, b bar, c bar plus a bar, b, c bar plus a bar, b, c plus a, b bar, c plus a, b, c. They represent the minterms, of course, 0, 2, 3, 5 and 7. Now, what are the missing binary values? The missing binary values are 0, 0, 1, which is a 1 or minterm 1, 1, 0, 0, minterm 4 and 1, 1, 0, minterm 6. Thus, the equivalent POS expression or product of sum expression has the corresponding missing 3 terms as sum terms 1, 4 and 6. The expression is represented in
canonical product form where the variables a, b and c define the domain of the expression. The numbers 1, 4 and 6 represent the maxterms present in the product of sum expression. The three terms, the maxterms are a plus b plus c bar. The second maxterm is a bar plus b plus c, and the third maxterm is a bar plus b bar plus c. These three maxterms are 1, 4 and 6 respectively. If the three sum terms are multiplied together and the expression is solved, it results in the 5 sum term SOP expression. So both the expressions are equivalent. The circuits implemented using either of the two expressions would be giving the same results. We've just looked at converting SOP forms of expression into POS form, and again POS product of sum form of expression into SOP forms. ये हमने किया था in terms of minterms and maxterms. So सीधा सा रूल जो है ये याद रखने के लिए SOP में जो minterms अवेलेबल हैं वो वाले नंबर के maxterms जो है POS फॉर्म में नहीं होंगे. सो दूसरे वाले नंबर जो हैं, लेट्स से 1 2 3 4 जो हैं SOP में हैं, 5 6 7 8 POS में होंगे. सो दैट्स द सिंपल रूल टू रिमेंबर व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. ओके, बहुत सारे हमने फायदे डिस्कस किए कि भाई आप जो हैं आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं. जब PLDs में फंक्शन प्रोग्राम करेंगे तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो वो आप कर सकते हैं. उसमें एक और फायदा जो है बाय हैविंग एक्सप्रेशंस इन स्टैंडर्ड SOP और POS फॉर्म इज दैट यू कैन डायरेक्टली मैप देम टू ए ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल हमने बात की थी, कोई भी जो सर्किट है उसका जो फंक्शन है दैट इज डिफाइंड बाय ट्रुथ टेबल. सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए सर्किट? सो बेसिकली जिन इनपुट्स के लिए आउटपुट 1 है उधर हम आउटपुट में 1 लिख देते हैं उसमें. सो अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो, सो एक्सप्रेशन जो है आप डायरेक्टली मैप कर सकते हैं ट्रुथ टेबल में. सो जो भी आपके पास मिनटर्म्स हैं, स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सो जो स्टैंडर्ड आपके पास मिनटर्म्स हैं वो आप फंक्शन टेबल में कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट पे 1 मार्क कर देंगे. इसी तरह अगर POS फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन है, स्टैंडर्ड POS फॉर्म में एक्सप्रेशन है, जो मैक्सटर्म्स हैं वो आप आउटपुट में कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनपुट्स के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स में जीरोस मार्क करेंगे, 1 नहीं मार्क करेंगे. सो जस्ट रिमेंबर दिस, मिनटर्म्स के लिए आउटपुट में यू मार्क 1s. फॉर मैक्सटर्म्स अगर आपकी एक्सप्रेशन मैक्सटर्म के फॉर्म में, देन इन द आउटपुट्स यू मार्क zeros. So let us have a look at representing these expressions in the form of function tables. The steps involved in representing an SOP or a sum of product expression in a truth table format are to first convert the non-standard sum of product expression into a standard sum of product expression. In the next step, the minterms present in the standard sum of product expression are marked as 1s in the truth table output column. The remaining minterms are not present in the sum of product expression, are marked as zeros in the output column of the truth table. A standard sum of product expression can be determined from the truth table by writing out all the minterms marked by 1s in the output column of the truth table. Considering the expression shown, a b bar plus bc, it is not a standard SOP expression. So it has to be converted into a standard SOP expression. So the standard SOP expression is a bar bc plus a b bar c bar plus a b bar c, and the last term is plus a b c. So you have 4 product terms. These minterms are 3, 4, 5 and 7 respectively. Now, how would you represent this expression in terms of a truth table? Basically, the inputs 0, 1, 1, which represents the binary combination 3, 1 0 0, which represents the binary combination 4, 1 0 1, which represents the binary combination 5, and 1 1 1, which represents the binary combination 7, or minterms 3, 4, 5 and 7. They are marked as 1s. The remaining input combinations do not occur in the expression, therefore they are marked as zeros. Similarly, by looking at the function table, you can extract or determine the expression. So by looking at the output, you have 4 1s at input combinations 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1 and 1 1 1. So representing these 4 standard minterms or writing out these 4 standard minterms, you have the expression. The steps involved in representing a product of sum expression in a truth table format are similar. So first, a non-standard POS or product of sum expression has to be converted into a standard form of product of sum expression. In the next step, the maxterms present in the standard product of sum expression are marked as zeros in the truth table output column. Instead of 1s, you mark them as zeros. The remaining maxterms that are not present in the product of sum expression are marked as 1s in the output column of the truth table. So basically, representing product of sum expression in a truth table is opposite to the representation of sum of product expression in the truth table format. A standard
Product of sum can be determined from the truth table by writing out all the maxterms marked by zeros in the output column of the truth table. So considering the product of sum expression a plus b bar into b plus c bar. So this is a non-standard product of sum expression because the domain of the expression is 3, a, b and c. 3 variables are being used. The two sum terms do not have all the variables. The first term does not have the variable c and the second term does not have the variable a. Now to convert them into standard form, you use the rule a into a bar. So by applying the rule, you have the standard product of sum expression a plus b plus c bar. The second term is a plus b bar plus c. The third term is a plus b bar plus c bar, and the fourth and the last term is a bar plus b plus c bar. Now these maxterms are represented by maxterms 1, 2, 3 and 5. So in the function table, the maxterm 1 represented by 0, 0, 1 is marked as 0. The maxterm 2 represented by the binary combination 0, 1, 0 is marked as 0. The maxterm 3 represented by the binary combination 0, 1, 1 is again marked as 0. And finally, the maxterm 5 represented by the binary combination 1, 0, 1 is marked as 0. The remaining maxterms which are not present in the expression are of course marked by 1s. We have looked at representing expressions directly in terms of a truth table format. Similarly, we can, if we have a truth table, from the truth table we can extract an expression. Expression जो है जरूरी नहीं कि वो sum of product form में हो. We can extract an expression in the product of sum form or sum of product form. So दोनों तरीकों से है. The rule to remember is कि sum of product form की अगर expression आपने लिखनी है from the truth table, अगर extract करनी है तो output column में जितने भी ones लिखे हैं, output पे जितने भी ones हैं वो terms अगर आप लिख दें, of course Minterms लिखेंगे, आपको sum of product form की expression मिल जाएगी. Similarly, अगर आपने product of sum form की एक एक्सप्रेशन लिखनी है एक्सट्रैक्टिंग और डिटरमिनिंग फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, सो क्या करेंगे, आउटपुट पे जितने जीरोस हैं बेसिकली उन वो जो जीरोस हैं दे रिप्रेजेंट द मैक्सटर्म्स. सो कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सटर्म्स अगर आप लिखते हैं यू हैव ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन. Now earlier we said that one way of simplifying Boolean expressions is by looking at the expression, then of course if you remember the rules and the laws and the theorems, you just apply them. Now sometimes it is difficult to perceive or to understand the expression. So perhaps the simplified version is not the actual simplified version which you could get if you had applied the rules and the laws properly. So there should be some systematic way of analyzing or simplifying the expressions. So the systematic way which we use to simplify expressions is the Karnoff map method or the K-map method. Basically, the Karnoff map method can be used to simplify expressions of two variables, which is very simple. You can easily simplify expressions of two variables. It is useful to apply Karnoff map method to simplify expressions of 3 variables, 4 variables and 5 variables. 3, 4 और 5 वेरिएबल्स की अगर एक्सप्रेशन आप खुद से कर रहे हैं जो नॉर्मल तरीके अभी हमने किए हैं तो उससे थोड़ा सा गलती के चांसेस हैं. सो Karnoff map is the appropriate way. Now what is a Karnoff map? Basically it is an array of cells. So let's say 3 वेरिएबल की एक्सप्रेशन है, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है. यू वुड यूज ए Karnoff map of 3 वेरिएबल्स. 3 वेरिएबल Karnoff map would have 8 cells. ठीक है. सो 8 cells, उसको अभी उसकी हम फिगर भी डायग्राम भी देखेंगे. So 8 cell Karnoff map can be organized in the form of a row matrix or array or a column matrix or an array. Each of the 8 cells would represent each of the 8 minterms or the maxterms. ठीक है, हमने बात की थी 3 वेरिएबल की अगर फंक्शन है तो उसके 8 minterms हो सकते हैं और 8 maxterms हो सकते हैं. इसी तरह 3 वेरिएबल का जो Karnoff map है उसके 8 cells होंगे. हर सेल जो है एक minterm को या एक maxterm को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें. Similarly, a 4 variable Karnoff map is going to be used to simplify a 4 variable expression. So 4 variable जो Karnoff map है उसके 16 cells हैं and each of those 16 cells would be representing 16 minterms and 16 maxterms. इसी तरह अगर आप 5 variable expression को solve करना चाह रहे हैं you would use a 5 variable Karnoff map. अब 5 variable Karnoff map हम देखेंगे बाद में, उसको जरा ड्रॉ करना, रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसमें. सो बेसिकली हम उसको देखेंगे, उसको एक 2 डायमेंशनल अरे के तौर पे हम देखेंगे. सो के मैप ऑफ 5 वेरिएबल्स वुड हैव 32 सेल्स. 5 वेरिएबल्स अगर आप एक्सप्रेशन हो तो कितने इनपुट्स होंगे, बेसिकली 5 वेरिएबल्स हैं सो 2 raised to power 5, 32 इनपुट्स हो सकते हैं उसमें. सो के मैप के 32 सेल्स होंगे. सो टू सॉल्व एक्सप्रेशंस ऑफ 3, 4 and 5 वेरिएबल्स,
3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल काइंड ऑफ मैप्स आर यूज्ड फॉर हायर वेरिएबल्स। अगर आपकी एक्सप्रेशन जो है जिसमें 6, 7 या 8 वेरिएबल्स हैं तो फिर उधर काइंड ऑफ मैप से भी सॉल्व करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो फिर अगेन एक और मेथड है जो वो भी हम बाद में स्टडी करेंगे उसमें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम काइंड ऑफ मैप्स वाला जो मेथड है उसको देखेंगे, उसको कैसे यूज करते हैं और कैसे एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। एंड यू वुड रियलाइज दैट इट इज ए वेरी इजी मेथड। इन ऑर्डर टू यूज द काइंड ऑफ मैप मेथड, इट इज एसेंशियल दैट यू हैव एक्सप्रेशंस बेसिकली इन द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और द POS प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप ये आसानी से करना शुरू कर दें, देन यू वुड रियलाइज कि अब जरूरी नहीं है कि POS या SOP फॉर्म में हो। जिस तरह भी एक्सप्रेशन है आप स्ट्रेट अवे काइंड ऑफ मैप में मैप करना शुरू कर सकते हैं। सो लेट अस स्टॉप फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट बिफोर वी लीव, let me remind you that we have today discussed different topics: Minterms, Maxterms, standard forms of product of sum expressions and sum of product expressions. ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे काइंड ऑफ मैप्स में। So please revise till we meet again next time. खुदा हाफिज and अस्सलाम वालेकुम।